Okay, last time we were discussing uh, proportional lag and proportional lead compensators. But before moving further, Irfan has asked a question that what is the relationship with the hardware? Irfan, are you sitting, beta? Yes, sir. अच्छा, मैंने आपको कहा था कि चैप्टर 1 में कुछ एग्जांपल्स हैं, आपने वो देखी थी? यस सर, वो मैंने देखी थी, लेकिन उससे सर फंक्शन दिया गया हो तो हार्ड में इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। वो सर चीफ ने एक लेक्चर अपलोड किया था हमारा सेफ्टी पे सर, Okay, हार्डवेयर में okay, इम्प्लीमेंटेशन okay, का। no, no problem, no problem. Let's look at this circuit. इस तरह के सर्किट से आप फेमिलियर हैं? यस सर, Okay. So that's ZA is input path impedance है और ZF जो है that is your feedback path. Now if you're familiar with this circuit, now this circuit is implementing all the proportional controllers except PID, because if we take proportional integral controller, in that case your ZA will be as a resistance which is named as RA, या इसको यूं कर देते हैं, that would be much better. And ZF will be a simple RC component, and we will be calling it R1, and we will be calling it as C. So K will be calculated as R1 over RA, and A will be calculated with R1 over C1. So you are just finding the transfer function, and the transfer function for this V out over minus V in, that would be equal to K S plus A divided by S, and the K and A can be found by using these relationships. Similarly, if we go further, if I'm interested in proportional lag, you have to change just this ZA, which is this resistor, and ZF is, this is your R1, this is your R2, and this is your capacitor C1, and as a result of that, the transfer function or the transmittance for this system is Ks plus A divided by S plus B, and in that case K can be calculated by this relationship. You're just solving the circuit, and B is equal to 1 over R2 C1, and A will be equal to 1 plus R2 over R1 into 1 over R2 C1. So that's your proportional lag controller. Again, the same circuit is being utilized. Similarly, if we are interested in knowing proportional lead, in that case your ZA will be replaced with this circuit,
and your feedback path resistance or impedance will be ZF, and that's equal to RF, and in that case your K will be equal to RF divided by R1, and B is equal to 1 over R2 C1, and your A will be equal to 1 plus R2 divided by R1 into 1 over R2 C1. This is in fact B. And your transfer function in this case is GCFS is equal to K S plus B over S plus A. And similarly, so the important thing is that if you know this configuration of operational amplifier along with the resistances and capacitances, you can implement any circuit in the hardware. As far as today's modern world is concerned, what you are using in industry, you are implementing these controllers through programmable logical controllers, and you are writing a ladder program in that context, और ladder program में आपके पास ये facility होती है कि आपके पास एक block है जो कि PI कंट्रोलर के लिए या PD कंट्रोलर के लिए या PID कंट्रोलर के लिए या लैग लीड कंट्रोलर के लिए आप यूज कर रहे होते हैं. सो आप वो जस्ट पैरामीटर्स जो हैं वो आप अपना पोल की पोजीशन और इनफैक्ट ये सारी चीजें जो हैं आप उसमें लिख देते हैं, एंड दैट्स इट. So all the simulations are done in your MATLAB, or the calculations are done with paper and pencil, and then finally you move to your PLC, और PLC पे आप वो values जो है वो ट्यून कर देते हैं. बल्कि normally मुझे याद है कि जब we were working in the industry and I was working in the on tuning these PIDs or PI controllers, we were just sitting in the कंट्रोल रूम, वन पर्सन वाज देयर एट द इंस्ट्रूमेंट पे मौजूद होता था और उसके साथ जो भी उसके साथ ट्यूनिंग करनी होती थी वो हम एक दूसरे के साथ वायरलेस पे बैठ के वो हम करते रहते थे, और फाइनली जो भी डिजायर्ड रिजल्ट्स हमारे होते थे तो हम पेपर पेंसिल या मैटलैब सिमुलेशंस हम यूज़ नहीं कर रहे होते थे. हम प्रैक्टिकली जो भी जिस तरह की रिक्वायरमेंट हमें फील्ड में चाहिए होती थी हम इस तरह से ट्यून कर रहे होते थे. योर क्वेश्चंस प्लीज रिगार्डिंग ऑल दिस. Okay. You can refer to chapter number 1, and all these things can be refreshed from there. You just have to solve these transfer functions or equations for your amplifier circuit, and that's it. And before moving further even, I would like to compare what we did last time and the lecture before that, because that should be a refresher kind of thing as well. So let's start with the PI जो हमने start किया था proportional integral controller से, which was PI controller. जी कोई है इस वक्त यहाँ बैठा हुआ जो कि हमें बता सके कि PI controller में क्या करते हैं हम, what is GCFS? GCFS क्या चीज है बेटा? S. और अगर मैं S प्लेन में जाऊं तो we are introducing a pole at origin and a zero at -a. ठीक है. अच्छा, अब आते हैं इस बात पे कि एक्चुअली हम गेन क्या करना चाहते हैं. एक्चुअली with respect to uncompensated system, what we are getting from here. Steady state performance जो है आपकी, as compared to uncompensated system, and relative stability. So these are the two things which we are watching. जी जनाब, when compared with an uncompensated system, what about relative stability? बढ़ती है, कम होती है? Relative stability reduce होती है.
ये यहाँ पे आपके सामने एक पोल जो आपने इस जी ओमेगा एक्सिस पे डाल दिया है, इसकी वजह से आपकी रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है, एंड स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस at the cost of this relative stability you are improving your steady state performance, and the main reason for that is in fact आपने अपना जो सिस्टम टाइप नंबर है क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है, सो सिस्टम टाइप नंबर इंक्रीज होने की वजह से आपका जो रैंप एरर कोएफिशिएंट है that is equal to infinity, और आपकी जो steady state ramp error है that is equal to 0. So these are the things associated with the proportional integral controller, and the problem with this is that we are losing relative stability. So that problem need to be solved in some other controller, और वो controller कौन सा हम उसकी तरफ गए, that was cascade lag. ओके कैस्केड लैग में आपके पास व्हाट अबाउट जीसी एफएस ऑफ दिस वन, so in this case what we are doing, it is k s plus a divided by s plus b, and in that case of course a is greater than b, and we are introducing a pole at minus b, and we are introducing a 0 at minus a, and as we are saying that a is greater than b, therefore your pole is on the right side. So if we talk about the relative stability, when compared with uncompensated system, what it will be? Reduce or increase. Steady state performance, system type number में कोई increase, and in this case what will be your ramp error coefficient. Okay, relative stability जो है आपकी when compared with the uncompensated system, because of this pole, the pole in the vicinity of this g omega axis, so relative stability when compared with uncompensated system is reduced, but it's better than this system. It's slightly better than this system. Okay, steady state performance जो है improve कर रही है, but इसकी ज्यादा बेहतर है as compared to uncompensated system. इसकी steady state performance जो है वो बेहतर है, और इसकी steady state performance बेहतर है, और system type number there is no change. So in order to get the performance better, तो आप क्या करते हैं, आप अपना जो रेशियो ऑफ द ए और बी है आप इसको चेंज करते हैं, सो दैट कि आपका जो के आई कॉम्पनसेटेड है दैट शुड बी रेशियो ऑफ द वो जो डी पैरामीटर है आपका वो यानी मैं यूं कह देता हूँ कि के आई कॉम्पनसेटेड जो है वी ऑलवेज कीप इट एज डी इनटू के आई अनकॉम्पनसेटेड. सो इस रेशियो से आप इम्प्रूवमेंट जो है आप अचीव कर रहे हैं. So that would be the placement. In fact, D is the placement or the distance between this pole and 0. And if we talk about because आप इसको ramp error coefficient अगर आप इसका देखेंगे तो that is not infinity now, that is constant. So as a result of that there will be some steady state ramp error in this case. ठीक है जी. So this is your cascade lag compensator, and when we move to cascade lead, so in this case जी जनाब अलीना बेटा बताएंगी आप.
Alina, are you there? Yes sir, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये बताइए कि इसका हमारा ट्रांसमिटेंस क्या है या ट्रांसफर फंक्शन इस GCFS कंट्रोलर का क्या है कैस्केड लीड के कॉन्टेक्स्ट में? देखना पड़ रहा है। No sir, I'm trying to see. चलें चलें बताएं, ठीक है, कोई मसला नहीं, बताएं। Sir, K into S minus A over S minus B. और S minus B। जी असफर, ये ठीक है? प्लस S plus A और S plus B because our zeros and poles are placed on the left half plane. So अगर मैं माइनस करता हूँ तो वो राइट हाफ प्लेन में चले जाएंगे, और अगर कंट्रोलर के पोल्स और जीरोस राइट हाफ प्लेन में होंगे तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सला, फिर तो ज़रूरत ही किसी चीज़ की नहीं है। So in this case what's happening, we are saying that A is lesser than B, so as a result of that what's happening, 0 and pole, so minus A पे आपका 0 पड़ा है, माइनस बी पे आपका पोल पड़ा है। व्हाट अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटी इन दिस केस? इंक्रीजेस सर, इंक्रीज कर रही है, रिलेटिव स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस, वी आर ट्राइंग टू मेक इट बेटर, बट देयर माइट बी सर्टेन सिचुएशंस के स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस जो है वो जेपरडाइज हो जाए। सो व्हाट वी डू, कैस्केड लीड के केस में हमारी रिलेटिव स्टेबिलिटी तो इंप्रूव कर ही रही है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस उतनी रहे जितनी एटलीस्ट कैस्केड लैग में या बाकी उसमें अनकम्पनसेटेड सिस्टम में रही है। So as a result of that, you want to minimize that loss which we can have in steady state performance. So in this case system type number में कोई change नहीं है, so the performance is obtained on the basis of Ki compensated जो है, we try to do it as K over D into Ku, where Ku is the gain of the uncompensated system जो आपका controller था, और K is the gain for this particular controller, cascade lead controller की हम बात कर रहे हैं। So now looking at all these three controllers, we can realize that how in different situations we can use different controllers, and we have talked about the hardware components of these as well, and we have talked about the recent implementation if you are working in the industry और PLC के context में भी हमने इसके ऊपर बात की है। Now let's move to the next controller, which is cascade lag lead controller. अब हम क्या कर रहे हैं, यानी हमने लीड को देखा, लैग को देखा, अब हम जा रहे हैं अपने दोनों कंट्रोलर्स को मिक्स कर रहे हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी आर ट्राइंग टू, इस ब्लेंडिंग के नतीजे में हमें कुछ इम्प्रूवमेंट जो है वो मिले, एंड वी आर सीइंग इट रफली। हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि आपकी जो ट्रांसमिटेंस है वो क्या है कि GCFS, in fact that portion is coming from the lag component S plus A over S plus B, and this component is coming from the lead. So we are taking S plus A over S plus B from the lag component, and we are cascading it with the lead component, and K is the gain for this cascade lag lead compensation. So as a result of this cascading, we are getting improvement in our steady state error. We are getting improvement in our relative stability. Of course, there is no change in n minus m because इसमें दो poles add हो रहे हैं और दो zeros add हो रहे हैं, और change in centroid will be this thing, and type number में आप कोई change नहीं कर रहे हैं. So what's happening? We are in fact
accumulating the best attributes of both lag and lead compensators. Lag compensator की जो आपकी attribute है, that is improved steady state accuracy, अभी हमने इसको देखा है, और lead की है improved relative stability. So we are combining both of these and we are hoping कि हमारा जो result है वो that would be in terms of improved relative stability and improved steady state error in case of this cascade lead lag compensation. When a lead compensator is cascaded with a lag compensator, stability can be improved over that of the lag compensated system, as we have talked, and while maintaining or somehow improving the steady state accuracy available when a lag compensator is used alone. So इस बात का मतलब ये है कि हम अपनी स्टेबिलिटी को तो हम इम्प्रूव कर ही रहे हैं एज कम्पेयर टू लैग सिस्टम. वी विल बी ट्राइंग कि हमारी जो स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी है वो उतनी रह जाए जितनी हम लैग कॉम्पनसेटर के लिए यूज कर रहे थे, या अगर पॉसिबल हो तो हम उसको इम्प्रूव भी करें. ओके, द पोल जीरो रेशियोज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. A over B होती है हमारी लैग कॉम्पनसेटर में which is called D, और B over A होती है लीड कॉम्पनसेटर में which is called D. So the error ratio of the error coefficients will become as Ki compensated over Kin uncompensated. That would be K over Ku, and K must be greater than Ku to increase the error coefficient. ठीक है, so आपको अपना error coefficient increase करने के लिए this is in fact double R. Okay, so आपको अपना K को Ku से बढ़ाना होगा, और for the given pole zero ratios, these are the given pole zero ratios. इसके लिए अगर हम देखें तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है या ट्रांसमिटेंस है हमारी कंपनसेटर की, that would be something like that. So it is K S plus A lag into S plus A lead divided by S plus B lag कह देते हैं इसको, and this is S plus B lead. So B lag is equal to A lag divided by D, और B lead जो है that is in fact A lead into D. And from where we are getting it? We are getting it from here. Any questions? Irfan, what is the motivation for using lag lead compensation? सर इसमें अब स्टेडी स्टेट एरर एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाती है और रिलेटिव स्टेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है. उसमें सर एक चीज है. जी अलीना, आप बताएंगी? सर बिकॉज दोनों के क्या कहते हैं डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हम यूज कर सकते हैं. तो ठीक है जी. तो क्या फायदा हो रहा है? सर जिस तरह लीड कॉम्पनसेटर स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देता है, लेकिन लैग जो है वो स्टेडी स्टेट एरर जो है वो रिड्यूस कर देता है. तो शाबाश. इसलिए वो दोनों मतलब एक तरह से यूजेबल हो जाते हैं. एडवांटेज उनका इस तरह से अटेन हो सकता है. मतलब ये है कि एज यू सेड कि स्टेबिलिटी जो है आप अपनी इंप्रूव कर रहे हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी बाय यूजिंग लीड कॉम्पनसेटर, एंड स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस जो है आप अपनी इंप्रूव कर रहे हैं बाय यूजिंग लैग कॉम्पनसेटर. So the claim is that when we will be combining both lead and lag compensators into a single controller, so as a result of that we are assuming right now we are assuming कि हमारी जो steady state performance भी बेहतर हो जाएगी, और वो तो बेहतर होगी, और इसी के साथ साथ हम अपनी स्टेबिलिटी को भी इंप्रूव कर लेंगे. ठीक है, अब बाकी जो है वो डिटेल्स हैं कि किस तरह से GCFS जो है आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है या ट्रांसमिटेंस है इस कंट्रोलर की,
that is in fact ks plus a lag divided by s plus a lead. So these are the position of the zeros. a lag और a lead जो हैं ये आपकी position of zeros हैं. और अगर हम बात करें इनफैक्ट डिनोमिनेटर में आपके पास s plus b lag और s plus b lead होना चाहिए, but b lag can be found by the relationship because you know now पिछले 3 compensator डिजाइन करने के बाद that we will be shifting everything, we will be fixing k and we will be fixing d, and of course we will be looking at the root locus in terms of a. So parameter जो है जिसके against आपका root locus जो है वो change कर रहा होगा, that would be a. So we are taking everything into that domain. So b log is converted into a log divided by d, and b lead is converted into a lead by d. So as a result of that, अब अगर हम जाएं to design lead and lag compensator, we need to select k, a lag, a lead and d. So these are the parameters from our previous knowledge. We know कि हमें ये देखना है, suppose अगर हम proportional controller की बात करें तो it was just k, ठीक है, जिसे हम अनकम्पनसेटेड सिस्टम कहते हैं. और अनकम्पनसेटेड सिस्टम में हमने के वो फाइंड आउट किया था जहां पे आपकी जो डैम्पिंग रेशियो थी दैट वाज 0.707. सो एट दैट पॉइंट आपकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी थी दैट वाज मैक्सिमम, एंड देन वी सेड कि अब इससे ज्यादा जो मामलात हैं वो इस सिंपल कंट्रोलर से हैंडल नहीं हो पाएंगे. सो दैट्स व्हाई वी मूव टुवर्ड्स cascade P proportional integral, cascade lag, cascade lead, and of course now cascade lag lead compensator. So ये जो complex controllers हैं, जब हम बात करते हैं PI की, तो PI में क्या था, हम फाइंड आउट कर रहे थे K को देख रहे थे और A को देख रहे थे, ठीक है. फिर इसी तरह से जब हम कैस्केड लैग और कैस्केड लीड की बात करते हैं तो उसमें हम के, ए और डी को देख रहे थे. वी डिड द फिक्सेशन ऑफ के एंड we assumed some value of d that was equal to 10 in normal practical situations. So in that case again the root locus was converted into a form जहाँ पे आपका जो varying parameter था that was a, और उसकी बेसिस पे आप अपने रूट लोकस को देख रहे थे और उस रूट लोकस में आप अपनी मैक्सिमम रिलेटिव स्टेबिलिटी देखते थे और फिर आप वो a फिक्स कर लेते थे और फिर पीछे जाते थे और k को चेंज करते हुए आप अपने स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस को देखते थे. सो वी हैव बीन टॉकिंग दिस सो मेनी टाइम्स, ठीक है. अब हम आते हैं कैस्केड लैग लीड पे. जब हम आते हैं तो इस केस में आपके सामने जो सिचुएशन है वो ये है कि अब आपको के फाइंड आउट करना है, यानी के सेलेक्ट करना है, ए लैग सेलेक्ट करना है, ए लीड सेलेक्ट करना है और डी सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक पैरामीटर ए का बढ़ गया है. अच्छा, देखते हैं जी अब हम क्या कर सकते हैं. तो टू सिंप्लीफाई आवर डिजाइन we can combine our previous lag and lead design parameters and do the final adjustments to find k. So हमारे पास lag और lead की previous जो calculations हैं, जो हमारे पास for the best performance those simple lag और simple lead compensators have achieved, और उनके लिए जो पैरामीटर्स हैं वो हमारे पास पड़े हुए हैं. सो देयर द ए वाज 0.251 कैस्केड लैग के कॉन्टेक्स्ट में, d was equal to 10 और k lag जो था that was equal to 5 and k1 that's the ramp error coefficient that was equal to 10. and similarly अगर हम जाएं लीड कॉम्पनसेटर के लिए तो लीड कॉम्पनसेटर में आपका जो a लीड था that was 3.47, d was equal to 10, k lead was equal to 40 and k1 lead, which is the ramp error coefficient for our lead compensator, that was equal to 0.8. Agreed? ये सारी चीजें आपके ज़हन में हैं किस तरह से हमने फाइंड आउट की थी हमारे पिछले लेक्चर्स में. ये सारी वैल्यूज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. जी बेटा कोई हाँ ना ही कर दें, मुसलसल मैं बोल रहा हूँ, कुछ हाँ ना कर दें, कोई क्वेश्चन पूछ लें. जी नंगियाल. यस सर. बोलें. हाँ जी सर नहीं है किसी. क्लियर है, जो अगर क्वेश्चन हर चीज क्लियर है. यस सर. ओके ईशा बेटा.
हलीमा सर जी, हलीमा बेटा यस सर जी बच्चा, एनी क्वेश्चन मेरा बच्चा? नो सर हाँ जी, हलीमा, I'm asking you beta, any question? नो सर Okay, everything is clear? यस सर Okay, great. So what will happen? जी इरफान बोलें। सर के फिर ऐड होगा दोनों का, क्योंकि कंसेप्ट में तो के एक ही हमने यूज किया ना, के इंटरेस्ट प्लस ए इंटरेस्ट प्लस ए। देख लेते हैं ना, अभी चल रहे हैं ना, उसी तरफ चल रहे हैं, उसी तरफ चल रहे हैं। जब आप कैस्केड करेंगे तो इनफैक्ट क्या सिचुएशन होनी चाहिए, कैस्केडिंग में क्या होना चाहिए, वो अभी देख लेते हैं। So using the values of the previous lag and lead compensator design, what will happen? आपका JC of S जो है, जिसको हम ऑलरेडी कह चुके हैं, so this is my JC of S. So in this case A lag और A lead जो है ये आपको यहाँ से मिल रहे हैं, A lag और A lead आपको यहाँ से मिल गए जो पिछली कैलकुलेशंस में मौजूद थे। So इस कॉन्टेक्स्ट में अब B lag और B lead जो है आप ये फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, because D is equal to 10. So finally, we will end up with our transfer function or transmittance of this lead lag compensator or lag lead compensator in this form. Okay? So these are the things coming from this is coming from lag and this is coming from lead. So that's why it is lag lead cascading of both of these. ठीक है, अच्छा, इसी में इरफान आपके सवाल का जवाब भी बहरहाल इसी के अंदर मौजूद है, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। रैंप एरर कोएफिशिएंट जो है that is improved by a factor of 16.7 for the lag compensator. Any volunteer or any person in the class who can tell me why this is the case, why it is 16.7? Irfan? जी इरफान, I'm waiting बेटा। सर के की वैल्यू कम होगी फिर 1 और के 1 रैंप एरर कोएफिशिएंट का इंक्रीज होगा। बेटा ये रैंप एरर कोएफिशिएंट क्या होता है? दिस इज K1, ठीक है, रैंप एरर कोएफिशिएंट K1 है और आपका स्टेप एरर कोएफिशिएंट K0 है, and which you can calculate it. We have calculated for lag compensator that was 10 और K1 this was per lag, और अगर हम बात करें K1 for uncompensated system that was 0.6. So that was for uncompensated. We had calculated all these things. So what is the factor of improvement? That is 10 divided by 0.6. So it is 16.7 as compared to the uncompensated. Yani lag divided by uncompensated, that's the ramp error coefficient improvement in this portion. And the ramp error coefficient improvement in effect is a factor of 1.33 for the lead compensator, because lead compensator के लिए आपकी जो K1 था वो था 0.8. So 0.8 divided by 0.6, that is 1.33. So these are the improvements. Both of these compensators independently they have got, but now we are cascading both of these compensators. So as a result of that, we will get the improvement of 22 times will be achieved when we will be cascading both of these compensators. So 16.7 into 1.33, that is 22 times की improvement जो है वो आप achieve करेंगे by using this cascade compensation, league lag compensation.
Agreed? Yes. Yes, sir. Okay. So finally, the value of k, जो इरफान का question है वो ये है, the value of the k for lag lead compensator will be found using the following relationship, because you are cascading k lag divided by ku, k lead divided by ku, and this is in fact k over ku is equal to this thing. So finally, your k for this compensator will be obtained by using k is equal to k lag into k lead divided by k uncompensated. ठीक? And if you use this relationship, you will be obtaining k is equal to 66.7. Why? Because k lag जो हमने calculate किया हुआ था that was equal to 5, और k lead जो था that was equal to 40, और ku जो था that was equal to 3. So all these gain parameters जो है ये हम already पिछले 3 डिजाइन्स में हम इन चीजों को देख चुके हैं. So as a result of that, इसके लिए जो optimum k है that should be 66.7, which is obtained using this relationship. And for his example, he has taken it as 60, round off किया है, और राउंड ऑफ करने के बाद ये आपका रूट लोकस है फॉर k इज इक्वल टू, यानी वेरिएबल k के लिए विद गिवन वैल्यूज ऑफ d, a lag एंड a lead. सो d इज इक्वल टू 10 के लिए, a lag और a lead की वही वैल्यूज हैं जो हम पीछे JCFS में देख चुके हैं. सो 0.251 एंड 3.47, and this is 0.251 and 3.47. So these are the values of put in your transfer function in the form of a, rather in this way it would be 1 plus k GCFS or GHFS के case में. So this is your ultimate system root locus. क्लोज लूप सिस्टम के पोल्स किस तरह से मूव कर रहे हैं. k इज इक्वल टू 60 पे आपके जो क्लोज लूप पोल्स हैं वो उनकी लोकेशन जो है वो ये है एट -0.315. दिस इज -0.315. आई शुड मेक इट विद रेड. सो दिस इज -0.315. इधर इसके एड्रेस लिख दे बच्चे. ठीक है, -2.14. This is -2.14. -38, 34.8. The scale is broken and this pole should be -34.8. There is some problem with this figure. -34.8 and -0.7596 plus minus. So these are the, rather this is not shown. चले हम इसको यूं कर लेते हैं because वो उसके notation change हो जाएगी. The pole is somewhere in -34.8 पे है, और ये जो पोल आपके हैं ये k is equal to 60 पे है. because k is equal to 60 पे जो पोल्स आपको नजर आ रहे हैं वो नॉर्मल इस शेप में नहीं है बल्कि वो इस शेप में मौजूद है. ठीक है, सो इसलिए उसने इसको यहाँ दिखाया ही नहीं है. सपोज कर लेते हैं ये पोल पड़ा हुआ है एट -34.8. सो ओपन लूप पोल्स आपके कौन कौन से थे इसको अगर मैं देखूं तो रूट लोकस किस तरह से मूव कर रहा है. ये मेरे पास एक ओपन लूप पोल था, ये ओपन लूप पोल था, और ये 2 ओपन लूप पोल थे. सो ये 4 ओपन लूप पोल हैं. ये ब्रेक अवे पॉइंट हुआ है, यहाँ से दोनों पोल उठे हैं, ये यहाँ पे पहुंचे हैं, और एक पोल जो है वो इस तरफ गया है, k इज इक्वल टू 60 पे यहाँ पहुंचा है, और दूसरा k इज इक्वल टू 60 पे वो यहाँ पहुंच गया है -2.14 और -0.315 पे. और इसी तरह से ये वाले पोल जो हैं ये इस तरफ मूव कर रहे थे और ये इधर आ रहे हैं. गॉट इट? So when we compare it with other systems, the ramp error has less steady state error than that for the lag compensated system, but much lesser than for the
lead compensated system or uncompensated system. You can compare it. और अगर ये मेरी transmittance है, which we have already talked, ramp error coefficient जो है, that is 12. In that case, you can calculate it using the formula, and this is my ramp error coefficient in this particular case, and of course it is increased. You can see it, so that's why 1 over k1 जो है that would be reduced, which we have already talked about. और percentage overshoot को अगर हम देखें तो जो lag में थी that was 47%, but here it is 31% in this lag lead compensation system. Settling time जो है step response का इस केस में आपके पास है 4.8 सेकेंड, which is again less than for the lag compensated system. So relative stability भी आपने improve कर ली, और आप जो है cascade lag lead compensation में आप अपनी performance जो है वो भी steady state performance जो है वो भी improve कर रहे हैं. Any questions regarding this? जी असफर बेटा. Yes, sir. Any question बेटा? No, sir. क्लियर है, हर चीज क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, sir. जबरदस्त. So I just repeat what we had done today. We had seen a different hardware circuitry के किस तरह से आप अपने PI, cascade lag, cascade lead और other जो आपके compensators हैं, you can implement those with simple op amps and resistors and capacitors. And then we have talked about the PI compensator as in terms of the performance. The relative stability of the PI is being reduced. Steady state performance improve कर रही है as compared to uncompensated system. Because system type number increase हो रहा है तो आपका ramp error coefficient जो है वो आपका infinity हुआ है, और उस ramp error coefficient के infinity होने की वजह से आपका जो steady state error है, ramp error है वो zero हो जाता है. So this is what we get in PI. और cascade lag के context में बात करें तो you are introducing a pole and zero as well, but this time the pole is not on the unit on the unit circle नहीं, बल्कि j omega axis पे नहीं है, origin पे नहीं है, बल्कि that is in the vicinity of your j omega axis. So as a result of that, the relative stability when compared with the uncompensated system, yes, it is reduced, but we are increasing our steady state performance, improved when compared with uncompensated system, but slightly jeopardized when compared with PI compensated system, because in this case K1 जो है ramp error coefficient जो है that is equal to constant, और आपकी जो ramp error है वो that would not be zero in this case. और जो परफॉर्मेंस आप इम्प्रूव करना चाहते हैं दैट शुड बी इन फैक्ट जो आपका A over B की जो रेशियो है दैट वुड बी डिसाइडिंग कि आप कितनी इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, एंड इन फैक्ट दैट रेशियो इज D इज इक्वल टू A over B. और यू वांट के KI कॉम्पनसेटेड जो है दैट शुड बी KI uncompensated multiplied with D, and in fact D is A over B, and that's the displacement or the distance between these poles and pole and zero, which we are introducing through this cascade lag compensator. Then we move to cascade lead system, और इसमें भी उसी तरह से एक पोल और एक जीरो हम ऐड कर रहे हैं, but in this case जो हमारी जीरो है that is on right side of the pole. So as a result of that, क्योंकि पोल का डिस्टेंस j omega axis से बढ़ रहा है तो आपकी relative stability जो है वो improve की है. Steady state performance जो है वो some cases में improve कर सकती है, some cases में jeopardize भी हो सकती है, but हमारा aim जो है वो ये होना चाहिए कि हम इसको जितना इस loss को जितना minimize कर सकें cascade lead में वो हम करने की कोशिश करते हैं, and that is done again with this ratio जो A over B की रेशियो है, और उसी के ऊपर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो एंड देन वी सेड कि जो बेहतर चीज़ें हैं लीड की, विच इज़ लीड की बेहतर चीज़ जो है रिलेटिव स्टेबिलिटी,
और जो लैग की बेहतर सिचुएशन है दैट इज स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस. सो वी आर कैस्केडिंग बोथ ऑफ दीज कॉम्पनसेटर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी वर होपिंग कि हमारी रिलेटिव स्टेबिलिटी भी इंप्रूव करेगी और स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करेगी. एंड वी हैव सीन दैट इज ऑब्वियस इन योर रिजल्ट्स. आपके सामने हैं कि किस तरह से आपका रैंप एरर कोएफिशिएंट जो है वो भी बड़ा है एज कंपेयर टू लैग के कॉन्टेक्स्ट में और लीड के कॉन्टेक्स्ट में. और इसकी वजह से आपकी जो एरर है दैट वुड बी रिड्यूस्ड. और फिर इसी तरह से परसेंटेज ओवरशूट कम हुई है, सेटलिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हुआ है एज कंपेयर टू लैग सिस्टम. सो दैट इज द थिंग व्हिच वी हैव अचीव्ड by implementing this cascade lag lead compensation system. So I'm stopping it here, and next time we will be doing PD or PID. So these are the two compensators which are left, and after that we will be moving towards state space representation of the systems. Any questions?